Hello students, today I want to discuss the comparison of chemical properties of metals and non-metals. Here metals and non-metals. Metals lose electrons and form positive ions. For example, sodium lose one electron and it will form sodium ion. So metals are electropositive elements. Non-metals gain electrons and form negative ions. Here, for example, chlorine gain one electron and it will form chlorine ion. So non-metals are electronegative elements. Metals combine with oxygen and form basic oxides. For example, magnesium react with oxygen, it will form magnesium oxide, and magnesium oxide is basic in nature. While non-metals combine with oxygen and form acidic oxides or neutral oxides. For example, carbon combined with oxygen, it will form carbon dioxide, and this carbon dioxide is acidic in nature. Now, basic oxides combine with water and form bases. For example, sodium oxide combined with water, it will form sodium hydroxide, that is a base. And in litmus test, the bases formed turn red litmus paper to blue. So you can learn this BRB, bases turn red litmus to blue. Acidic oxides react with water and form acids. For example, carbon dioxide react with water, it will form carbonic acid. In litmus test, the acids formed turn blue litmus paper to red. So you can learn ABR. ABR means acid turn blue litmus to red. Now, oxidation of metals. Sodium and potassium catch fire in oxygen. To prevent oxidation, they are kept immersed in kerosene. आपको पहले बताया था सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप में है, तो इनको ओपन में रखते ही ये आग पकड़ लेते हैं, इसलिए दे विल केप्ट इन इमर्स्ड इन केरोसिन, इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है. The surfaces of metals like magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of their oxides. So no further oxidation takes place. Magnesium on heating burns forming magnesium oxide. Copper on heating becomes coated with black colored copper oxide. Silver and gold do not react with oxygen. ये क्यों? क्योंकि सिल्वर और गोल्ड लेस रिएक्टिव मेटल्स है, इसलिए ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ना ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे. नाउ नॉन मेटल्स. Carbon dioxide and sulfur dioxide are acidic oxides and they will turn blue litmus to red. Carbon monoxide, water and nitrous oxide are neutral oxides. There will be no action on litmus paper. A jet of hydrogen gas burns in air with a pale blue flame. Steam produced can be condensed to water. For example, hydrogen react with oxygen, it will form water. Now, reaction of metals with water. Sodium and potassium react violently with cold water, evolve hydrogen gas and catches fire. For example, potassium react with water, so it will form potassium hydroxide and hydrogen gas released. ऐसे sodium react with water, it will form sodium hydroxide and hydrogen gas. Magnesium reacts with hot water, तो magnesium react करेगा hot water के साथ, magnesium hydroxide is formed and hydrogen gas is released. लेकिन aluminium, जिंक और आयरन ये स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेंगे, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, और ये उनकी ऑक्साइड्स बनाएंगे. जैसे एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा. आयरन वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, ये सारी स्टीम के फॉर्म में है वाटर, और ये आयरन ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा. ऐसे ही जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. नाउ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस.
नॉन मेटल नहीं रिएक्ट करते, और ना ही ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ना ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। नाउ reaction of metals with acids. Metal react with dilute hydrochloric acid and sulfuric acid to liberate hydrogen gas. Metal react with hydrochloric acid, then salt is formed and hydrogen gas is released. So zinc react with hydrochloric acid, zinc chloride is formed and hydrogen gas is released. When metal react with the dilute nitric acid, then hydrogen gas is not evolved but water is formed. Why? Because this dilute nitric acid is a strong oxidizing agent. That's why. So metal react with dilute nitric acid, then it will form metallic salt, water and oxides of nitrogen. Now exceptional cases are there. Magnesium and manganese, they evolve hydrogen gas with dilute nitric acid. In case of nonmetals, nonmetals do not displace hydrogen from acids because nonmetals are electron acceptors and they cannot supply electron to hydrogen. Now, reaction with hydrogen of metals. So, hydrogen can share or lose electrons, but active metals like sodium, potassium, calcium can force hydrogen atom to accept the electrons to form hydrides. For example, sodium react with hydrogen gas, it will form sodium hydride. Calcium react with hydrogen, then it will form calcium hydride. Now in case of non-metals, hydrides of non-metals are stable compounds and are formed by sharing electrons. For example, nitrogen react with hydrogen, it will form ammonia. Hydrogen react with sulfur, it will form hydrogen sulfide. Thank you and have a nice day.